Bismillahirrahmanirrahim. My name is Bilal Gilani. I am Executive Director at Gallup Pakistan. Today we're starting a new podcast series in which we would try our best to talk about the glass half full perspective about Pakistan and to talk about how there is light at the end of the tunnel. We're all very used to hearing very pessimistic views about Pakistan. The talk shows in the country are always abuzz with that. There's a lot of critique about where we lost the trajectory in the journey from Pakistan's 1947 to now. But as I believe, and this podcast series would hopefully make you believe that there is a lot that has gone right as well. In this debate about what we have gained and what we have lost, we feel that the lost part has been overemphasized, but what we've gained is not emphasized enough. So today, in this series, we're starting. I'm joined by Mustafa Hyder Syed. Mustafa Saab is Executive Director at Pakistan China Institute. And very honored to have him here. I turn on towards Mustafa to introduce himself and how he feels about this idea and taking this forward. Well, I think firstly, it's a great idea to have a conversation on, as you said, Bilal, on the glass half full, because my ears are full with the glass half empty conversation and discourse. मर गए पिट गए तबाही हो गई है और कनाडा का वीजा लगवाएं ग्रीन कार्ड लगवाएं और इस मुल्क का कुछ नहीं बनेगा ये आई थिंक we need to go beyond that. And I think we need to demonstrate agency. And and as you rightly said, that we need to find those things which have gone right for Pakistan, and ultimately there are fantastic people in every realm of Pakistan. And I think it was recently displayed in the Islamabad Literature Festival. We have so many great minds, public intellectuals, artists, क्रिएटर्स हैं और बड़े अक्लमंद लोग हैं जी और टैलेंटेड लोग हैं जिन्होंने ग्लोबली अपना लोहा मनवाया है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस कॉन्वर्सेशन एंड आई एम हियर डिस्पाइट माय viral as you can see and despite my hoarse voice but I think this is a very key conversation that people our age need to be having. This is very important कि हमारे जो demographic में जो आते हैं जो नौजवान हैं I think this is the conversation that we need to be having because you know that very cliche saying but it's a very true saying of Kennedy, John F. Kennedy, ask not what your country can do for you but what you can do for your country. So I think I'm privileged that I'm part of the first conversation. Yeah, thank you so much. So, my organization, Gallup Pakistan, essentially talks to the common Pakistanis across the entire geography of Pakistan. And when we talk to the common Pakistanis, their perspective about where Pakistan is now sometimes differ quite a lot with what the analysts or people on the TV, people in the newspapers, people right, or also in the social media talk about. The common man's perspective, for example, has been that Pakistan is not a failure. I think many of us have listened to Shabbar Zaidi and many other intellectuals and great people terming Pakistan as a failure. But the common Pakistani on the road and in the villages and the towns doesn't feel so. So in a recent survey we did, almost two-thirds of Pakistanis felt that they were better off than their parents' generation, and something must have gone right for them. So the purpose of this series is to talk about those things that have
gone right so that we can build up on that. The purpose is not to definitely talk about how we have achieved the objective or the goal where we should be or we ought to be, where we ought to be and where we should be. The journey still continues, but we can only bear with the hardships and the difficulties of the time if we are able to look back at the past and celebrate what we have achieved in the past 70 odd years. Mustafa, I'd ask you, what do you think is the are some of the sort of the great upsides and the downsides of the Pakistan's growth trajectory in the past 70 years? And I mean, you are, as you said, you were hopeful about the future. तो आपके ख्याल से ऐसी क्या चीजें हैं जो things that have gone right and या आपको क्या उम्मीद दिलाती हैं फ्यूचर के बारे में, ये things that we should all be looking forward to and we are perhaps not looking at. बिलाल, सबसे पहले तो आपने अपने सवाल का जवाब अपने सवाल में ही दे दिया, और वो ऐसे दिया है। जब आप बात करते हैं आम आवाम की और लोगों की, मिडिल क्लास की, आवाम से बाहर आ जाए, मिडिल क्लास की बात करें, तो आप देखेंगे कि बेशुमार टैलेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्राइज है, इनोवेशन है, रेजिलियंस बड़ी है जी, परसिस्टेंस है। आई हैड द ऑनर ऑफ, जब ये स्वात में ऑपरेशन हुआ था, मिलिट्री ऑपरेशन, को जब याद होगा, जनरल कैनी के दौर में, आई थिंक गालबन 2006 की बात है, 2005-2006 की। अमेरिका में मैं पढ़ रहा था, आई वॉज कंप्लीटिंग माई अंडर ग्रेजुएट स्टडीज। मैं वापस आया क्योंकि मुझे पता चला कि बहुत बड़े पैमाने में डिस्प्लेसमेंट हुई है लोगों की, और स्वात के जो लोकल्स थे, एंड वहाँ की जो एलीट भी थी ना बिलाल, दे हैड नॉट इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स, और उनके बड़े बेसिक लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स थे इन टर्म्स ऑफ लैंड, लार्ज स्वेथ्स ऑफ लैंड थे जो वहाँ की जो लैंडेड एलीट थी, फार्मिंग एंड बाकी इस तरह था वहाँ इकोसिस्टम। जब उन्हें कोई आई थिंक 24 आवर्स का नोटिस दिया गया कि आपने हर चीज छोड़ना है, दे लेफ्ट एवरीथिंग, और वो स्वाबी काफी सारे आ गए थे, मुल्क भर में गए थे, बट दे वर कॉन्सेंट्रेटेड इन स्वाबी। मैंने वहाँ कोई 2.5-3 महीने गुजारे स्वाबी में। एक एनजीओ थी संगी, उसके साथ आईडीपी से एंगेज किया मैंने, सुबह से लेकर रात तक। एक शिवा अड्डा एक जगह स्वाबी में, इट्स नेक्स्ट टू कर्नल शेर खान शहीद का घर। वो गेस्ट हाउस था, 2 बाथरूम थे उसमें, और कोई 40-50 मर्द, ठीक है जी। तो आप अंदाजा खुद लगा लें, हम बाहर चटाई पे सोते थे। और उससे जो मैंने सीखा कि ये लोग जिन्होंने हर चीज इनकी खत्म हो गई थी, माली हालात इनके बहुत खराब थे, इन्हें ये नहीं मालूम था कि मामलात ठीक कब होंगे, वापस कब हम जा सकेंगे, क्या हमारा घर उधर होगा भी है, हमारी चीजें जो वहां छोड़ गए वो होंगी भी है। ये सारी अनप्रिडिक्टेबिलिटी और अनसर्टनिटी के बावजूद उनका सबसे जो चीज मुझे याद है कि एक पॉजिटिव, कंटेजियसली पॉजिटिव एटीट्यूड और पर्सोना जो था जब हम उनसे बात करते थे जाके, एंड उनके जेब में कुछ नहीं होता था, लेकिन दे यूज्ड टू मेक श्योर के वो हमें एक वसी दस्तरख्वान जो है हमारे सामने बिछाएं अगर खाने का टाइम है। दिस इज द रेजिलियंस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। जब आप बात करते हैं ये आम लोगों में होप है पाकिस्तान के बारे में, और शायद एलीट में नहीं, इसमें ये दिस आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ इट्स इन एंड ऑफ इटसेल्फ। बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि अगर फेलियर हुआ है कहीं भी, बिलाल साहब को हमारे पाकिस्तानी और अवाम में नहीं, फेलियर टॉप पे, इट्स बिन अ फेलियर ऑफ लीडरशिप। The leadership has failed the country and the country, not the other way around. So this is very critical. And interestingly, the it's the elite which has, I believe, our elite has been a very extractive elite.
एन एक्सप्लॉइटेटिव एलीट, हम जैसे एलीट कैप्चर कहते हैं, और हमने वो पेट्रोनेट सिस्टम्स बनाए हुए हैं, हम वी कम इनटू पावर टू बेनिफिट आवरसेल्व्स, I'm sorry to say, by and large, I can't say give a sweeping statement, but by and large, पर हम extractive हमारी mindset होती है, how to get our pound of flesh, if you will. तो जो हमारे लोग जिनके स्टेक्स मुल्क में हैं, जिनके बाहर कोई अपॉर्चुनिटीज या उनकी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, उनका कन्विक्शन ज्यादा है और उनमें रिजिलियंस ज्यादा है। और मैं समझता हूँ कि अगर पिरामिड के टॉप को डेमोक्रेटाइज कर दें, टॉप ऑफ द पिरामिड को डेमोक्रेटाइज कर दें, जो वो नहीं है, frankly speaking, I think this conversation is evolving very fast. But if you democratize the top of the pyramid, I think that vast potential can be unlocked. Vast potential. Because these people with ideas, with grassroots understanding, who are, अब देखें ना, चाइना का आपने मेरा इंट्रोडक्शन किया कि मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट में। फिर आप चाइनीज मॉडल ऑफ गवर्नेंस स्टडी करें और किशोर महबूबानी की किताब पढ़ें, हैज चाइना वन, उसमें वो कंपेयर करता है, और किशोर महबूबानी ना वो पाकिस्तानी है और ना वो अमेरिकन है, ही इज अ सिंगापुरियन डिप्लोमैट, एंड ही इज नोन एज अ अथॉरिटी ऑन बिग पावर कंपटीशन। हैज चाइना वन में वो से डीकंस्ट्रक्ट और अनपैक करता है सीपीसी को, जो मेन पार्टी जो रन करती है, और बाकी ममालिक के सिस्टम्स। वो कहते हैं कि जो सीपीसी में एक वही चीज है जो उसको डिस्टिंग्विश करती है बाकी गवर्नेंस सिस्टम से, इज द इमेंस प्रायोरिटी ऑफ मेरिटोक्रेसी। और आप ऊपर तब पहुंचते हो, आप पहले विलेज के पार्टी सेक्रेटरी लगते हो, विलेज, फिर आप जैसे आप कह रहे हैं हमारी तहसील होगी, डिस्ट्रिक्ट, फिर प्रीफेक्चर, then province, and ultimately, if you keep on performing and you are untarnished, you reach the top, you go in the central committee, and not the top, the central committee जो governing उनकी बीजिंग में उनकी जो मेजर सेंट्रल कमेटी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की, जाहिर है फिर उसमें एक पोलिट ब्यूरो है और फिर स्टैंडिंग कमेटी है जिसमें 6-7 लोग होते हैं सिर्फ। ये बहुत जरूरी है लाल साहब, जब तक आप अगर कल को एक डिपार्टमेंट में होंगे और आपको मैं जब तक लिस्टें दूंगा कि जी ये 20 लोग हैं मेरे गिराए, ये मेरे गांव के, इन्हें आपने एक्सक्यूज मी, इन्हें आपने अकोमोडेट करना, टिल देन आवर सिस्टम विल रिमेन एज द स्टेटस quo। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपने दुरुस्त पॉइंट आउट किया। आई थिंक एक ये जो मेजर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू, एंड देन दोज फ्यू जिनके हाथ में इतनी सेंट्रलाइज्ड पावर थी, उनको हम एलीट भी कह सकते हैं, उनको हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। आई थिंक दे फेल्ड अस इन अ मेजर वे अक्रॉस द पास्ट 70 years। और आम पाकिस्तानी और या ग्रास रूट लेवल के ऊपर पॉलिटिशियन उसका इतना मेजर फेलियर नहीं है जितना इन पावर्स का जो I mean made sure that no one else is part of the power sharing agreement that happens across the. So unlocking that or disentangling Pakistan from that particular centralization of power is I mean is the need of the hour. Correct. There are a lot of World Bank reports which talk about how Pakistan's major uh, crisis is essentially a crisis of institutions basically crippling the entrepreneurship in the country. So there's no shortage of resources. There's not even a shortage of human resource, not even of money. But what's happening is that जो सारा potential है वो हमने strangle कर दिया है by having laws and institutions and government or procedures and red tape. Yes. Uh,
और वो जो सारा प्रोसीजर है उसकी एक फ्लिप साइड उसकी ये है कि जो आ, उसका मेजर बेनिफिशियरी है वो इलीट है, और जो उस सारे का जो बियर्स द ब्रंट ऑफ इट इज द पुअर। और आपको शहर नजर आते हैं जिनमें जो महंगे होटल्स और महंगे रेस्टोरेंट्स को तो इंक्रोचमेंट करने की इजाजत है, मगर उसी जगह पर थड़ा लगाने वाला जो है वो आए दिन जो है वो डेवलपमेंट एजेंसीज के अथॉरिटीज के ऊपर है। पीपल कैन रिच पीपल कैन पार्क देयर कार्स, बट उसी जगह के ऊपर थड़ा लगाने वाला जो है, जो कि उससे कोई एक्चुअली वैल्यू क्रिएट कर सकता है, उसको इख्तियार ही नहीं है। एक एक चीज है कि आप उससे फीस ले लें, एक चीज है कि आप उससे एक्सट्रैक्टिव फीस ले रहे हैं, तो उसके पास इख्तियार ही नहीं है। एंड देन द स्टेट बेसिकली गोज ऑन अ रैम्पेज अगेंस्ट अगेंस्ट दोज पुअर पीपल जिनके टैक्स के पैसों के ऊपर वो चल रहे हैं। सो आई थिंक one of these ills is identifying it rightly, because there is a lot of, I mean, same from the elite discourse, one gets to hear this very often, that the people of the country, जिनको हमने, who basically feed these elites and the political elites and the bureaucratic elites and the military elites, जो अपने खून पसीने से इनको फीड करते हैं, their discourse is that the people of Pakistan has failed them. They call them कि ये टैक्स चोर हैं, ये मेहनत नहीं करते, इनके बच्चे बहुत ज्यादा हैं, ये सफाई का ख्याल नहीं रखते, ये ईमानदार नहीं है. So I think one of the corrections in the discourse is actually to talk about how the real Pakistan has actually not failed. It's the elite in the country that have failed. मैं आपके सामने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन रन करना चाहता हूँ, जी which talks about how I mean, we have definitely our problems and some of the problems we talked about, but in the past 20 years, somehow हमारी आंखों के सामने एक there was an unraveling of a great prosperity that was happening, and that prosperity somehow evaded us because our concentration has always been about the elite. तो एलीट की प्रॉस्पेरिटी एज सच नहीं हुई, मगर गरीब तरीन पाकिस्तानी की एक प्रॉस्पेरिटी हुई है। और वो प्रॉस्पेरिटी इसी वजह से कॉन्वर्सेशन में नहीं आई, क्योंकि हम बहुत ज्यादा सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट, जो ग्लास हाफ एम्प्टी है, उसके ऊपर कॉन्वर्सेशन करते रहे. मोमिना, कैन यू अलाउ मी टू शेयर दी? कोई ओपन द प्रेजेंटेशन, मेरे दिमाग से एक पॉइंट निकल जाएगा जी. विद योर परमिशन. जस्ट वांट टू सबमिट. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. हमारा जो माइंडसेट है ना जी, इट्स अ कॉलोनियल माइंडसेट. क्योंकि हम पे हुआ है ब्रिटिश राज, और वो ब्रिटिश राज की जहनियत जो है अभी तक हमारी एलीट में है. और हमें अनफॉर्चुनेटली, मैं अमेरिका में जब मैंने जी काम किया था, तो एक कांग्रेसमैन एडम पाटन के साथ मैंने वाशिंगटन डीसी में काम किया. वहाँ कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस होती है जी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है, और उनके कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की बहुत बड़ी फैसिलिटी होती है. और उनके दे हैव अ बिग एड्स, a plethora of aids to support the legislators. आपने अभी तक कानून साजी नहीं की है. जब से पाकिस्तान एक अलग नया इंडिपेंडेंट मुल्क बना है, आपने उसे रिजुविनेट और रिबॉर्न कानून साजी के जरिए तो किया ही नहीं. पाकिस्तान पीनल कोड के तहत अभी तक, आप आपने जिस ठेले वाले की बात की है, या जो रोटियां, आप अगर वो एक बंदा चोरी कर ले, तो आप वो 10-10 साल हमारी जेलों में ये पड़े होते हैं, जिनके पास वकील हायर करने की सहूलत नहीं है, और वो 10-12 साल, 15 साल वो जेलों में रगड़ा खा रहे होते हैं जी. तो आपने वो कानून साजी नहीं की. शायद आप, हम कुछ इसमें वैसे स्टेक होल्डर्स हैं जो बेनिफिशरी हैं इसमें, इसलिए नहीं हुई. लेकिन आपका जो जहन है, ये वही है, एक एक सांप वाला. और जब वो पूछते थे कि सांप का मूड कैसा है, जब अर्दली पूछता था,
वो गोरा साहब होता था जी। तो हमारा अभी तक वही है। और अनफॉर्चुनेटली जी, मैं बड़े फ्रेंकली बात करूंगा, आप बात करें कभी जाए ना कमिश्नर हाउस किसी डिस्ट्रिक्ट में, कमिश्नर हाउस आप जाए, आप कहेंगे कि मैं किस महल में आ गया। वो ब्रिटिश ने जो अपने लिए बनाए हुए थे, फ्री में वो रहते हैं। और हम कहते हैं कि जी ये पब्लिक सर्वेंट्स, ये सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट है। लेकिन आपने प्री डिस्पोज ही ऐसा किया, इट्स द सिस्टम इज प्री डिस्पोज, इट्स वायर्ड इन अ वे दैट there is hierarchy. It's the symmetry is mind-boggling asymmetry. So we need to change that. और साथ ही में मैं ये भी कहता चलूं कि जो हमारे सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप है, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग हमने की हुई है, वेयर एज हमारी सिराइकी भी है, हजारा भी है, हमारा जो है साउथ पंजाब देख लें, बलूचिस्तान को देख लें, भी वहाँ एक चीफ सेक्रेटरी होता है। एक चीफ सेक्रेटरी जो है वो आपका क्वार्टर ऑफ अ मुल्क, जो सूबे का चीफ सेक्रेटरी होता है, क्वार्टर ऑफ अ कंट्री चला रहा होता है। ही इज द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, ही इज द किंग, ही इज लॉर्ड माउंटबैटन। आपकी लोकल गवर्नमेंट तो है ही नहीं। तो ये बहुत एक बुनियादी मसला है इफ एम्पावरिंग द आम आवाम, लोकल कम्युनिटीज। दूसरा, एक्सक्यूज मी, दूसरा जो है कि आप जब, अभी हमने टॉप ऑफ द पिरामिड की बात की बिलाल साहब, आप मुझे एक पार्टी बता दें, सियासी पार्टी जमात इस्लामी के अलावा, जो एक, जिसमें जेन्युइन इलेक्शन होते हैं और उनका सरबराह हर 5 साल या हर 6 साल बदलता है। एक जमात इस्लामी है प्राइमरली, एंड आई वुड से मे बी एमकेएम क्वालिफाइज। उसके अलावा तो आपकी कोई जेन्युइन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक पार्टी तो मैं नहीं समझता है। ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है। तो ये भी एक बड़ा बुनियादी इशू है आपका। That's that's very true. और उसके ऊपर भी एक इंटरेस्टिंगली एक बड़ा ए हिस्टोरिकल सा व्यू है that जब पाकिस्तान बना 1947 में, तो उस वक्त पाकिस्तान की एक्चुअली पावर इस इलाके के अंदर जो पावर थी वो इतनी सेंट्रलाइज नहीं थी। उसकी बुनियादी वजह ये कि यहाँ पर एक एटलीस्ट डजन स्टेट्स जो हैं वो ऑपरेट करती थी। तो बहावलपुर की एक स्टेट थी, उसका एक बादशाह था जो एक लिमिटेड एरिया के अंदर एक बेनेवोलेंट डेस्पॉट के तौर पे ऑपरेट करता था। बट उसको पता था कि उसके रियाया की क्या ज़रूरियात हैं, उनको वो कैसे सर्व कर सकता है। तो अगर आप बहावलपुर सिटी जाएं तो आपको कुछ कुछ हद तक ये नजर आता है कि एक्चुअली बहावलपुर सिटी ऑफ द 2023, जहाँ पर साहब बहादुर डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर साहब जो हैं, जो इस्लामाबाद से और कोयटा के चक्कर लगा के पेशावर के और टूरिज्म की मिनिस्ट्रियां संभालने के बाद अब शहर के साहब बहादुर बन चुके हैं। अ, उनकी हुकूमत और जो नवाब साहब थे भावलपुर की, उनकी हुकूमत एक्चुअली नवाब साहब की हुकूमत उनसे बेहतर थी। नवाब साहब की हुकूमत में अस्पताल भी बनाए गए। नवाब साहब की हुकूमत में म्यूनसिपल कचरा उठाने के लिए मर्सिडीज गाड़ी जो है वो लंदन से इंपोर्ट करके उसके साथ जो है वो झाड़ू लगाया गया है ताकि शहर को साफ रखा जाए। बैक इन द 1947 हम बात करें, विक्टोरिया अस्पताल बनाया गया। इस हद तक कि खवातीन के लिए एक लाइब्रेरी भी बनाई गई बैक इन द 1947, और उस जमाने की। इसी तरह से बहावलपुर की नहीं है, खैरपुर की अपनी एक स्टेट थी, चित्राल की अपनी एक स्टेट थी, एंड देयर वाज अ काउंटलेस नंबर ऑफ अदर स्टेट्स व्हिच इवेंचुअली डिसाइडेड टू मर्ज इनटू पाकिस्तान। सो हमने जो डिसेंट्रलाइजेशन का सफर है वो एक्चुअली रिवर्स किया बाय फर्स्ट क्रिएटिंग द वन यूनिट अंडर द मिलिट्री रिजीम, एंड देन उसको फिर हमने मजीद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया बाय द 4 प्रोविंसेस एंड द फेडरल सिस्टम।
और फिर उसके अंदर जो फेडरल सिस्टम के अंदर हमने चेक्स एंड बैलेंसेस रखे थे कि कंकरेंट लिस्ट थी, इसको पिछले अगले 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद 5 से 10 साल में कंप्लीटली फेडरलाइज हो जाना था। वो सफर 2018 तक जो है वो हमने कंस्ट्रेन करके रखा। और 18th अमेंडमेंट जो है वो इन दैट रिगार्ड इज इवेंचुअली इट्स स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बट इट्स ओनली अ स्टेप। सो ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है local governments तक। We talk about the constitution, they talk about 3 tiers of the government. So there is the national government, and then there is a provincial government, but there's also a local government. uh, तो हम पिछले 1.5 साल से इस बात का रोना तो रो रहे हैं कि नेशनल का इलेक्शंस नहीं हो रहे और प्रोविंशियल इलेक्शन लेट हो गए, बट नो वन सीम्स टू हैव केयर्ड कि जो थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट है विच द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्राइन्स has been under abeyance for Yeah. at least a good 5 years. So in some And sense, हमने एक which, civilian despot बिठाया। which arguably might be the most important part. That's The right. third. That's true. Like, आम पाकिस्तानी से जब हम सवाल करते हैं कि आपका मसला क्या है, तो वो तो ये कहता है कि मेरे पास जो है वो सफाई का मसला है, मेरे पास एजुकेशन का मसला है, मेरे पास साफ पानी का मसला है। And none of these three, which are the top issues that the people talk about after inflation and unemployment, इसका फेडरल हुकूमत के पास या प्रोविंशियल हुकूमत के पास कोई हल नहीं है। So again, yeah, the elite is rather than the rest of the country is to be blamed, whereas the current conversation is कि आम पाकिस्तानी जो है वो टैक्स चोर है, इसलिए हुकूमत आगे नहीं बढ़ पा रही या मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि आम पाकिस्तानी चोर है। Hmm. उसी तरह से जो फेडरल और प्रोविंशियल हुकूमतें हैं, अगर हुकूमत ही को ब्लेम करना है तो इनको ब्लेम करना है फॉर हैविंग स्ट्राइफल्ड द लोकल गवर्नमेंट इनटू एक्शन। But having said all of these issues and where the problem exists in the either the analysis part or the actually the failure and governance part, so क्योंकि दोनों problems हैं कि governance का failure हुआ फिर एक analysis का failure हुआ। अगर हम रॉन्ग प्रोग्नोसिस के साथ ही मजीद सर जो है वो दीवार के साथ मारते रहेंगे तो इससे तो कोई फायदा नहीं होगा। एंड आई रियली Yeah. फील कि इस वक्त जो है वो सिचुएशन ये है कि हम ये कहते हैं कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ा दो, तो हम ये कह रहे हैं कि जो आवाम जो है वो पहले ही पिसे हुए हैं, आप उनके मजीद टैक्स डाल दें ताकि जो एलीट है वो मजीद जो टैक्स एक्सट्रैक्ट करके यहाँ से मुल्क से बाहर ले जाए। So there is a misdiagnosis. But despite all of that misdiagnosis and the issues that we face, some of the things seem to have gone right as well in the past 20 years, despite our problems. And I mean, it gives me hope that the fact that things have gone right as well. If we were to put our house in order, which in my view is not an absolutely difficult task, only that prognosis is incorrect. So once we put the prognosis right, we could do even better. Is that is some of these things that I wanted to bring to your attention and to open it for conversation. Let me just try to say that. Sorry, हम यहाँ पर ऐसे ब्रेक ही ले सकते हैं। ना ना, आप can you see my screen? Very clear, जी, बिल्कुल. Yeah. So the purpose of the of sharing some of the facts is because I really do feel that and I don't blame them, but one of the problems that we currently face is that there is a wrong prognosis of the Pakistani problem happening, and it starts with a very honest attempt at actually showing that everything is wrong because we want to make sure that no one takes it easy. And in that process of us making sure that everyone, we catch everyone's attention, we जी. try to absolutely run over anything that has gone right as well. तो जैसे होता है ना कि आपने कोई चीज ठीक करनी हो और आपका ये ख्याल है कि और लोग आपको सीरियसली नहीं ले रहे, तो आप बहुत चीखो पुकार करते हैं
और अगर कोई चीज छोटी मोटी ठीक भी हुई है तो आप कहते हैं कि कहीं ऐसा इसका जिक्र कर दिया तो लोग कहीं ढीले पड़ जाएंगे। और तो आई इसमें हैव अ फीलिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल। जी। जी सर, मैं कह रहा था बिलाल साहब, इसमें एक हमारा बड़ा मसला है कि जब हम पाकिस्तान की अक्सर बात करते हैं तो उसमें कुछ लोग या कुछ जमातें मुल्क का मफाद भूल जाती हैं, और वो दे आर विलिंग टू कास्ट aspersions on Pakistan and it's what it has done for us, what the life that it has given all of us. And you eclipse that to make a certain point, to score a brownie point, which serves your political interests. तो हमारे कभी कभी जो थिंकिंग है वो नैरो और बड़ी पैरोकियल हो जाती है और बड़ी लिमिटेड हो जाती है. एंड वी आर विलिंग टू फॉर पाकिस्तान एंड इट्स इमेज बी द पंचिंग बैग एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एंड एक और पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, आपने कोई 2-3 बार बात की है बिलाल इसकी, टैक्सेस के लोगों को हमारी लीडरशिप अक्सर टैक्स चोर कहती है कि वो नहीं करते पूरा. दे डोंट दे डोंट फुलफिल देयर एंड ऑफ द बार्गेन. ये जैसे कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो एक अनरिटन सोशल कॉन्ट्रैक्ट है. जो लीडरशिप है, लीडरशिप होती है थ्रू मॉरल अथॉरिटी. ये बड़ी अहम बात है लाल साहब. यू कैनॉट लीड any company, any organization or a country without moral authority. ये हो ही नहीं सकता. तो जब आप अपने लोगों को कहते हैं टैक्स दें, और अगर आप खुद आप पे अगर एक सवालिया निशान हो टैक्स, या आपके इर्द गिर्द लोगों को हो, या कुछ अ, ऐसी बड़े ग्रुप्स या कंपनीज जिन्हें एक्सेस है टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, उन्हें सब्सिडीज मिल रही हो, बड़ी बड़ी और एग्जेम्पशंस मिल रही हो, और उनके लिए ऐसा रोज इशू आ रहे हैं. और जो हमारे दुकानदार हैं, बरादरी है, ट्रेडर्स हैं, या एसएमईज हैं, उन पे हम टैक्स टैक्स लगाई जाए तो वो नहीं देंगे टैक्स. ये तो बड़ा, आई थिंक इट्स वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड. बिल्कुल तो आपने दुरुस्त कहा। आई थिंक एक ऑलमोस्ट लतीफे की बात है कि जो हुकूमत और हुकूमत के लीडरान हैं उनके अगर आप टैक्स गोशवारे देखें तो आपको जी यानी हैरान और कुछ हद तक शर्मिंदगी सी होती है। जी उन्हें संभव नहीं होती कि वो अवाम को टैक्स का भाषण देते हैं। और अगर आप उन्हीं के गोशवारे देखें तो जी जो एक वजीर आजम है, मैं उनका नाम नहीं लेता, कल ही मैंने उनके 2018 के गोशवारे देखे। जी एफबीआर का पब्लिक डॉक्यूमेंट था। और वो वजीर आजम ही लोगों को टैक्स देने के और टैक्स चोरी के लेक्चर देते हैं। और उन्होंने पूरे साल में 2018 में 11,000 रुपए का टैक्स हुकूमत पाकिस्तान को दिया। देखें. तो इस वजह से मकसद जो है वो किसी को ब्लेम करना नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर एलीट ने ये तरीका कार इख्तियार कर लिया कि हम जो आम पाकिस्तानी जो 99.9% है, अ, इसको हम बोलने से रोकेंगे इस तरीके से कि हम हर वक्त शोर मचाते रहें कि आप चोर हैं, ताकि उनकी अपनी चोरी जो है उसके ऊपर कभी कॉन्वर्सेशन ना की जाए। तो एनालिस्ट्स का या ऐसे लोगों का कि जो थोड़ा सा स्टैंड ले सकते हो, उनके लिए बहुत ही जरूरी है कि वो ये बात इसको कॉल आउट करें कि ये रॉन्ग दैट कॉमन पाकिस्तानी हैज बेसिकली failed. It is the elite that have failed. But as I was saying, despite all of these issues, many of the things have gone right. If we were to correct these ills, we might be actually able to get past all of the issues in a much quicker. कुछ अचीव कर चुके हैं, तो अगर हम अभी रिजॉल्व कर लें तो हम इजी भी आगे जा सकते हैं। इसमें एक आई थिंक पीपल पाकिस्तान जब बना और until 1971 भी we were जी a very proud nation, and we were not only just a proud nation, we were a leader in the world, on the world stage.
And the idea of the leadership was not that we were very rich, but we were very proud of the fact that we were very large. And we are. जो हमारे एनालिस्ट्स हैं वो कभी कभार ये बात भूल जाते हैं, तो कभी कोई हमें सिंगापुर की एग्जांपल देता है, कभी कोई हमें लिथुआनिया की और स्वीडन की एग्जांपल देता है. But we forget that we are the world's fifth largest country. So there are only other four countries, हमारे अलावा. And then we are also the second largest Muslim country in the world. So in the committee of the Muslim world, there are more than 50 countries in the OIC, and we just smaller than Indonesia. So I think part of the problem is that we've also lost pride in the fact that who we are. और हम एक डिफीट के perspective से जब सोचते हैं, तो वी आर अनएबल टू एक्चुअली कम अप विद अ गुड way of coming out of the ditch. So we are in a ditch, but we can only come out of the ditch by being hopeful that we can. पर हमें इस वक्त जो लीडरशिप है, अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल लीडरशिप भी, अभी वाली भी, इससे पिछले भी तमाम जो हैं लीडरान जो हैं, वो हमें ये बावर कराते गए हैं कि हम बहुत पिसे हुए हैं. तो उस पिसे हुए जहन से उन्होंने अपनी मसाया का इमेज देने के लिए हमें ये बताया कि हम बहुत पिसे हुए हैं, और हम गुलाम हैं, लोगों ने बाय किया. तो इस तरीके से मुझे लगता है कि हम बाहर नहीं आ पाएंगे. सो वी नीड टू reclaim who we really are. So we are the fifth largest country in the world. We are the second largest in the Muslim world. uh, हमारे जो प्रोविंसेस हैं वो दे आर बिगर देन इवन द कंट्रीज. सो पंजाब प्रोविंस में और आप जहाँ बैठे हैं, ये यूके से भी बड़े हैं आबादी के लिहाज से, ये जर्मनी से भी बड़ा है. इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू, एक्चुअली नॉट बिगर देन जापान, बिकॉज जापान की पॉपुलेशन रिड्यूस हो रही है. सो जस्ट द पंजाब प्रोविंस इज एक्चुअली बिगर देन जापान, एंड इवन बिगर देन फिलीपींस, जहाँ हम कॉन्वर्सेशन होती है कि एक बड़ा मुल्क है. There are only 10 countries which are bigger than even Punjab. So if Punjab was a country, there will only be 10 more countries which are bigger than Punjab even. हमारे शहर जो हैं वो भी कंट्री के बराबर हैं. कराची शहर जो है वो बेल्जियम के बराबर है. रावलपिंडी इस्लामाबाद जब मैं और आप बैठे हैं, वो कुवैत से और लबनान इतना मशहूर मुल्क है, मगर रावलपिंडी इस्लामाबाद की आबादी अगर आप जोड़ लें तो वो लबनान से भी बड़ी है, न्यूजीलैंड से बड़ी है, आयरलैंड से बड़ी है. आ, हम एक बहुत ही यूथफुल नेशन है. आम पाकिस्तानी जो है वो एक 21 साल का मीडियन एज है. तो अगर आप सर्वे करने निकलें तो आपको जो एज औसतन मिलेगी वो यहाँ 21 साल मिलेगी. इसके मुकाबले में अगर आप इटली चले जाएं या आप जापान चले जाएं, तो एक आम जो शहरी है उसकी आबादी ना आप 50 साल की है. So age is a very crucial. These youthful population is an asset that we time again we forget. कि जो दुनिया भर में एक क्राइसिस है पॉपुलेशन ना होने का और यूथ पॉपुलेशन ना होने का, we don't encounter that, and actually we have a very large pool of youthful people who are willing to contribute and are wanting to contribute. जो हमें एक मुस्तकिल जो इशू है इस वक्त वो ये है कि हम जो इमीडिएट हमारा फोकस है वो डिटरमिन हो रहा है मीडिया से और इंटेलेक्चुअल एलीट से. और वो जो इंटेलेक्चुअल एलीट है उसके पास जो अवेलेबल इश्यूज हैं, ये अवेलेबल डेटा सेट्स हैं, वो उससे बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. सो इन द बिहेवियरल साइंस डोमेन इट्स कॉल्ड अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक और एन अवेलेबिलिटी बायस, कि जो इजीली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है अगर हम उसी की बेसिस पे एक डिसीजन मेकिंग का डिसीजन कायम कर लें अपना. सो मेरी ये राय है कि हम एक हमारा क्राइसिस ये है कि वी हैव ऑलवेज फोकस्ड ऑन द wrong part of the glass. So we always focused on the glass half empty. Whereas in my view, we should be focusing on the glass half full. Um, इसमें से अगर आप कुछ स्लाइड्स देखें तो अगर हम सोशल डेवलपमेंट ही की बात करें, तो बिटवीन 1986 एंड between 2022 Pakistan's GDP has increased by 9 times. So ये GDP डॉलर्स में है, and therefore it is in some sense inflation adjusted. तो अब जहाँ आबादी बढ़ी है, जहाँ मुल्क में आबादी में इंक्रीज हुआ है, वहाँ हमारी इनकम में भी इंक्रीज हुआ है. हमारी पावर्टी जो है वो ओवर द पास्ट
between the year 2000 to 2020 has not just reduced, it's actually plummeted. So again, these are numbers not created by Gallup or myself or by a national organization. These are numbers from the World Bank. अगर आप World Bank की वेबसाइट पे जाएं तो आपको यही ग्राफ नजर आएगा. और जो डिस्कोर्स है वो यही है कि एट द एंड ऑफ द डे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका मेजर फोकस यही है कि आम पाकिस्तानी, आम इंसान, आम सिटीजन जो है उसको गुर्बत की लकीर से ऊपर लाया जाए. डेटा तो ये सजेस्ट करता है कि between 2000 and 2020 poverty rate has plummeted in the country. So we talk about China having liberated more than 900 million Chinese out of poverty, and here is actually Pakistan having done almost similar level of feat, but we don't seem to be recognizing it. It's not just the poverty; it's also the ultra poor that have actually gone drastically down. So, एक बात, yeah, critics can talk about कि poverty reduce हो गया है, मगर जो गरीब तरीन पाकिस्तानी है वो तो शायद increase हो गया हो. So again, World Bank numbers between 2000 and 2020, 2000 में 40% पाकिस्तानी ultra poor थे, according to the government, the World Bank definition. Now only 5% of Pakistanis are ultra poor. So something went right in the past 20 years. Uh, it's not just about कि हम गरीब गरीब थे, अब कम गरीब हो गए हैं, बल्कि जो कम गरीब होने की वजह से हमारे पास पैसे आए तो हमने बच्चों को तालीम दे दी. ये ग्राफ ये शो करता है कि पाकिस्तान में जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें इनरोल होने वालों की शरह में बहुत इजाफा हुआ है. So we now move on to the next issue, which is the quality. But the fact that we were encountered with the situation in 2000 के बच्चे स्कूल ही नहीं जाते थे, वो हमने सक्सेसफुली पूरा कर लिया है. और इस जहां हमने ये चीज सक्सेसफुली एड्रेस कर ली है, वहां हम क्वालिटी के इशू को भी एड्रेस कर लेंगे. ओके, हम अगर कॉन्वर्सेशन जो है वो पॉजिटिव नोट से करेंगे तो तब हम आगे जाएंगे. पर एक तरह से ये यानी किसी भी माशरे के लिए, किसी भी स्टेट के लिए, it is a moment to celebrate if one identifies a problem and is able to overcome it in a very short span of time of 2 decades. So we are an education emergency of not being able to send children to school, and we have solved that according to the World Bank's data, again available. हमने ना सिर्फ प्राइमरी लेवल के ऊपर इनरोलमेंट में इजाफा कर लिया, बल्कि हमने एक्चुअली टर्शरी लेवल पे भी इनरोलमेंट में मेजर इजाफा कर लिया पिछले 20 साल में. इन द ईयर 2000 there were only 431,000 students studying in undergraduate or beyond degree. In the year 2022, we now have more than 1.5 million, which you can see as in the 2016. We have now more than 1.5 million. And then we have an additional 164,000 in the university stream as well. So ना सिर्फ हमने प्राइमरी में इजाफा किया, बल्कि हमने टर्शरी में भी इजाफा कर लिया. अगेन ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग विद 20. ना सिर्फ हमने गुर्बत कम की, हमने एजुकेशन भी आउटकम्स इंप्रूव की, अब हमने हेल्थ आउटकम्स पे गिरा दें. तो हेल्थ आउटकम्स में भी one of the key statistics is life expectancy, and the life expectancy in the country has been actually rising significantly. तो एक आम पाकिस्तानी 1982 में 50 साल की उम्र तक रहता था, अब 67 years का रहता है. 2004 से भी कंपैरिजन करें तो हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज इम्प्रूविंग. It's not just about health or education or poverty. It's actually manifested in the assets that Pakistanis are making. So Pakistan is one of the world's largest motorcycle markets, and that all has happened in the past 20 years. So किसी वजह से ये all of these good things evaded us, and I want to remind you that the past 20 years have actually been very, very difficult. So we were in a continuous war, what was called as the war on terror. We have had at least three major climatic events in the sense of the earthquake in 2005. 1.5 लाख लोग फौत हो गए तो उस 2005 के जल्जले में. लाखों लोग जो हैं वो फ्लड से अफेक्ट हुए in at least 2 more years between 2000 to 2020. वो सब के बावजूद भी हम ये सक्सेस है. Maternal mortality ले लें, it's reduced significantly. Again 140 जो इंडिकेटर है,
maternal mortality का 140 out of 100,000 live births. I'm not no way saying that this is something that we should be proud of, but we should be proud of the fact that हमने पिछले 20 साल में इनमें इसमें significant reduction की है. हमने maternal mortality में reduction की, हमने और ये हमने कैसे की, उसके ये रीजन नजर आती है कि देर इज एन इम्प्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटीज नाउ अवेलेबल एट द हाउस होल्ड लेवल. तो पिछले 20 साल में लोगों ने अपने घरों में लैट्रीन बनाए. इंडिया ने जब वो लैट्रीन बनाए तो उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया कि अब जो है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक सक्सेस स्टोरी के तौर पे बिल्ड किया जाता है कि उन्होंने ना सिर्फ राइजिंग इंडिया का नारा दिया, बल्कि बेसिक तरीन चीज जो है, घरों में लैट्रीन बनाने को फरोग दिया. हेल्थ आउटकम्स में और बहुत सी चीजें आती हैं, मसलन ये कि क्या पाकिस्तानी बच्चे जवान जो हैं वो क्या तंबाकू नोशी से मरे जा रहे हैं या उनमें इजाफा हो रहा है. सो अगेन द सिनिकल एंड द क्रिटिकल माइंड सेज कि ये सब सोशल इल्स आ गए हैं हमारे में. हालांकि इफ यू लुक एट द डेटा, Pakistan's use of tobacco has actually gone drastically down. So in the year 2000, the World Bank survey suggested 37.5% of Pakistani adults were consuming one or the other form of tobacco, either smoked tobacco or smokeless tobacco. Now that number is 20%. So we've not just curtailed like the very hard health indicators, but a more softer one, which is to do with lifestyle and attitudes, which is the tobacco. So हमने उसको भी introduce reduce कर दिया. Uh, and as I was saying, Pakistan इस सारे की वजह ये भी है कि आम पाकिस्तानी पाकिस्तान के बारे में, और उन्होंने क्योंकि एक्सपीरियंस किया है, जो आम पाकिस्तानी ने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया है पिछले 20 साल में कि उनके घरों में लैट्रीन बन गए हैं, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो टर्शरी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, माएँ पहले से बेहतर सेहतमंद हैं, पावर्टी रेट रिड्यूस हो रहा है, इनकम्स थोड़ी सी इम्प्रूव हुई हैं जो डिस्पोजेबल उनके पास हैं. इस वजह से पाकिस्तान जो है वो among the top 10 countries who say that they are hopeful, they is among the top 10 countries which say that their life is better than their parents' life. यूएस, यूके और फ्रांस जो है इस इंडिकेटर पे पाकिस्तान से नीचे हैं, क्योंकि वहां पर एक जनरल ग्रोथ होती रही है, तो अब वो ये कहते हैं कि हमारी ग्रोथ जो है वो स्टाइफल होती है. वेराज पाकिस्तान में 2/3 पाकिस्तानी ये कहते हैं. आने वाले वक्त के बारे में भी मोर पूरी उम्मीद है, इसी वजह से क्योंकि उनके ख्याल से चीजें बेहतर रहती होती गई हैं. तो असेंशली आई वांट टू क्लैरिफाई कि मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में मसाइल नहीं है, क्योंकि ऐसा कहना एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी भी होगी. मगर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि 1947 का पाकिस्तान, 2022 का पाकिस्तान, 2022 का पाकिस्तान यकीनी तौर पर 1947 के पाकिस्तान से बहुत बेहतर है. 2000 का पाकिस्तान और 2022 का पाकिस्तान, 2022 का पाकिस्तान सेहतमंद है, पहले से ज्यादा पढ़ा लिखा है, तालीम याफ्ता है, बेटर इनकम्स पे मबनी है, और कुछ हद तक बेटर गवर्नड भी है. क्योंकि ये तमाम जो सहूलियात हैं, इनमें से एटलीस्ट 50 to 60% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्कूलों से डिलीवर होता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम से डिलीवर होता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से डिलीवर होता है. तो इसमें इस सक्सेस स्टोरी में आम पाकिस्तानी का सबसे बड़ा किरदार है कि उन्होंने इन तमाम मुसीबतों के बावजूद, जो आप जैसे कह रहे थे, कि वो हिम्मत नहीं हारे कि नॉर्थ वजीरिस्तान को जो हमने खाली करा लिया, वो हिम्मत नहीं हारे जब पाकिस्तान ने सवात को खाली करा लिया, वो हिम्मत नहीं हारे जब पाकिस्तान जो है वो फ्लड्स आ गए, वो हिम्मत नहीं हारे जब पाकिस्तान में अर्थक्वेक आ गए. दुनिया में उस तरह के अर्थक्वेक्स रेयरली आए. तो एक रेजिलियंट एंड बैटल हार्डन्ड पाकिस्तान ने इसको सक्सेसफुल किया. इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान जैसी भी थी, लूली लंगड़ी थी, करप्ट थी, हमारे सियासतदान जो हैं वो इनएप्ट थे, उस सब के बावजूद भी दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट ऑफ crooks. This is not a government of led by corrupt people. It was a government that tried to still do quite well among these difficult times. And therefore हमें इस सारे के ऊपर बिल्ड करना है, हमें इस हाफ ग्लास जो एम्प्टी है
मगर हमें उस ग्लास हाफ एम्प्टी और ग्लास हाफ फुल के ऊपर अब हमें बिल्ड करना है। अगर हम ये सोचेंगे कि पैंदा खाली है बल्कि पैंदा टूटा हुआ है, जो कि हमें सुनाया जाता है कि ग्लास ही टूटा हुआ है तो इसमें अब डालने का क्या फायदा, तो फिर वो होगा कि जो हमारे इलीट कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, कि वो पाकिस्तान में के बारे में कंप्लीटली होपलेस भी हैं और हुकूमत भी वो ही करना चाहते हैं, और मुल्क से बाहर अपने बच्चों को तालीम भी वही दिलवाना चाहते हैं बल्कि वहां ही रखना चाहते हैं, क्योंकि उनके ख्याल से गरीब का बच्चा पाकिस्तान में रहे, उनका बच्चा बाहर रहे। आ, तो हमें ये जो डिस्कोर्स है, इस डिस्कोर्स को चेंज करना है, हमें एक होपफुल डिस्कोर्स से आगे बियॉन्ड मूव करके एक बेहतर पाकिस्तान को जन्म देना। So this is my point of view. If you have any feedback on this, do you think, if you were to think that I'm being too optimistic, I would definitely want to correct myself here. पहले तो जी, I want to congratulate you on what Barack Obama calls the audacity of hope. And I think that is the single most potent factor that can drive any society or civilization forward. And अगर आप बात करते हैं होप की, जो आपकी प्रेजेंटेशन का premise है, of course, coupled with data, and the data was, I think, spot on. I agree with the conclusions that are drawn in this presentation. And I think I appreciate also the initiative कि आपने ये लिया कि दिखाया जाए एक evidence based तरीके के साथ, rather than speculation and conjecture के, or what is the score, और ये एक स्कोर कार्ड का कह सकते हैं बस। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जो चाइना में जब चाइना एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, और जो रेड आर्मी ने जब जीत हासिल की, व्हेन दे वर विक्टोरियस, तो उस वक्त चाइना एक बहुत गरीब मुल्क था, मतलब इट वाज अ वेरी पुअर कंट्री, और वहाँ there were no cars, there were only bicycles, there was very less industrialization. And उस वक्त they looked towards the Soviets कि आप यहाँ फैक्ट्रीज लगाएं आके चाइना, और वो फैक्ट्रीज में उनकी शर्त ये थी कि दे शुड बी जॉइंट वेंचर्स विद द चाइनीज पीपल, सिर्फ सोवियत ओन नहीं होने चाहिए, और हमें हम सिखाएं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो सकता। और जब ये 1949 में चाइना तश्कील हुआ, इट केम इनटू बीइंग, उसके बहुत बाद वहां इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुई। The economic liberalization started in 1979. So 30 years तक it was a purely communist economy, और गुर्बत थी। और आपने एक बात की, एंड आपने दिखाया अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, the our demographic dividend of young people as an asset, क्योंकि आप अगर देखें जहां बड़ी पॉपुलेशंस हैं, जिनका आपने भी जिक्र किया, जो जो बड़े ममालिक हैं जिनमें बड़ी पॉपुलेशंस हैं, वो बहुत तरक्की याफ्ता है। मैं ग्लोबल साउथ की बात कर, इंडोनेशिया, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तबाह के। हमारी में जो कॉमन डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है इन ममालिक। सो मैं यही समझता हूँ कि वी आर प्री डिस्पोज टू टेक ऑफ। दूसरा, जब आप बात करते हैं कि ये इम्पेडिमेंट्स हैं, ये तीन चार चीजें हैं जो बॉटलनेक्स हैं, जिसकी वजह से हम आगे नहीं निकल सके। आप याद रखें कि जो रिफॉर्म का प्रोसेस होता है इन आवर नेबरहुड, इट हैजंट टेकन अ वेरी लॉन्ग टाइम। अर्दोगान से पहले टर्की को देख, it was not the economic powerhouse that it is now. Erdogan has been power for what, 10 plus years?
Turkey was a big, important country, but it was not an economic regional powerhouse. आज तो Turkey matters in the Middle East में उसकी say है, it has a seat on the table. 10 साल लगे, अब आप आते अपने बगल में बांग्लादेश. When I was growing up, लोग बांग्लादेश का मजाक उड़ाते थे, बंगालियों का मजाक उड़ाते थे. They had a patronizing and a condescending attitude towards them. I think ये जो है शेख हसीना जो वजीर आजम है, she's been in power I think 8-10 साल. इस 10 साल में it has been a complete economic boom. Transformation हुई है. Padma Bridge, Karnataka, kind of numerous examples made in Bangladesh. Industrialization, Chinese industries have moved there, relocation. Majority of textile is now exported from Bangladesh. Textile, I think it's now probably number one. ये कब कितनी देर में हुआ? पिछले 10 सालों में. उससे पहले यही हमारा वाला था वहाँ. There was a political turmoil इतना ज्यादा था, power politics इतनी ज्यादा थी. फिर आप देख रहे हैं इंडोनेशिया का आपने अपनी पापा में भी जिक्र किया. इंडोनेशिया ने तो रिसेंट couple of years में ये टेक ऑफ हुआ है. Indonesia's economic boom has primarily, I would say, it'd be fair to say, has been under Jokowi. When Jokowi, from the governor of Jakarta, was propelled to become the president of Indonesia, and this is his second term of Khatam ho rahi hai. So under Jokowi ये ट्रांसफॉर्मेशन आई इंडोनेशिया की. वरना इंडोनेशिया वाज नॉट, इट डिडंट मैटर उस तरह. इट वाज नॉट इन कन्वर्सेशंस. आपके पावर पॉइंट में अगर हम ये 6 साल पहले बात कर रहे होते हैं, आपके पावर पॉइंट में इंडोनेशिया ना होता. आज है आपकी पावर पॉइंट में इंडोनेशिया बिकॉज इट मैटर्स इकोनॉमिकली, बेसिक मैटर्स. इसमें एक तो मैं ये कहूंगा कि हमें एक चीज सीखनी चाहिए चाइना से, क्योंकि हम इतनी पाक चीन दोस्ती के नारे लगाते हैं, झंडे भी चाइना के हमने लगाए होते हैं और नारे लगाते हैं हम, लेकिन हम सीखते नहीं है चाइना से. ये अलविया है. नारे लगाने में हम आगे आगे होते हैं. डेंग शॉपिंग, जो चेयरमैन माओ वाज देयर पॉलिटिकल किंग पिन, आप कह लें द फादर ऑफ द नेशन पॉलिटिकल, लेकिन जो उनका इकोनॉमिक आप कह लें ट्रांसफॉर्मर था, जो उनका इकोनॉमिक जो फादर ऑफ द एक न्यू चाइना है, ऑफ मॉडर्न चाइना, वो है डेंग शॉपिंग, जिसने ये डिस्पाइट लॉट ऑफ ऑपोजिशन उसने कहा हमने लिबरलाइज करनी होगी अपनी इकोनॉमी. और फिर WTO में जाके 1996 में, आई थिंक 97 में चाइना बना. आप अगर डेंग शॉपिंग का एक कोट देखें, वो कहता है क्लीन योर हाउस बिफोर यू इनवाइट गेस्ट्स. उसका जो इट्स अ प्रोफाउंड सेइंग, उसका मतलब ये है कि पहले आप अपने आप को इंटरनली कंसोलिडेट करें, अपने आप को इंटरनली स्ट्रेंथन करें, पर्टिकुलरली इकोनॉमिकली. आप अपने जब इंटरनल कोहेशन आपका कंप्लीट हो जाए, जब आपकी इंटरनल डायनामिक्स कंप्लीट हो जाए, और जब आपके इंटरनल चैलेंजेस पे मरहम पट्टी पड़ जाए, फिर आप एक्सटर्नली इंगेज करें. फिर you can externally deal with countries, states, multilateral institutions, but invite guests after cleaning your house. हमारा एक clear focus होना चाहिए. And dovetailing with what you earlier said, Bilal, it has to be economy, economy, and economy. ये वो जमाना गुजर गया है जब आप कहें कि हम एक न्यूक्लियर पावर है. वो 10 साल पहले used to get you a seat on the table, that alone. Now it doesn't.
what you are manufacturing that others want to buy is what matters. Or what are you buying that others are producing? Are you a market big enough that another head of state wants to meet you? आजकल फैसले अगर साइडलाइंस पे यूएन में या जब आप जाते हैं ना, ये मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं G77 या G20, उनमें बायलैटरल मीटिंग्स इसलिए होती हैं, क्या हमें इस मुल्क में मार्केट एक्सेस मिलकर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा. आज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और बाइडेन मिल रहे हैं, अभी मिल लिए होंगे. अगर हम जब ये खत्म करेंगे पॉडकास्ट तो हम देखेंगे क्या रीड आउट है उसका. उनकी वन ऑफ द बुनियादी वजह मिलने की ये है कि द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ चाइनीज गुड्स इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सो वो न्यूज वीक आपको कवर याद है बिलाल, वो था कुछ साल पहले, इज द इकोनॉमी स्टूपिड. तो वो हमें यहाँ समझने की जरूरत है. और जब तक हमारा जो भी पावर में हो, इकोनॉमिक पॉलिसी कंसिस्टेंसी और एक यूनानिमिटी के साथ, कंसेंसस के साथ जब तक नहीं होगा, उस वक्त तक हमारी सिमत दुरुस्त नहीं हो सकती. मैं समझता हूँ जब तक कल को JUIF है या पीपल्स पार्टी है या ANP है या PML है, everyone has to be on the same page on the economy कि अगर गवर्नमेंट चेंज भी होती है तो इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस को ये नहीं होना चाहिए कि यार अब ये ड्रास्टिकली इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज होगी और अनसर्टेनिटी होगी. वी हैव टू बी प्रिडिक्टेबल. वी हैव टू एक्सूड प्रिडिक्टेबिलिटी एंड सर्टेनिटी, एंड दैट कैन ओनली बी अगर जितने स्टेक होल्डर हैं, सिविल एंड मिलिट्री, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, वो इकोनॉमी पे ऑन द सेम पेज और बात करें. यू हैव टू एंगेज, पुटिंग डिफरेंसेस असाइड. सबको बात करनी होगी इसके लिए, पाकिस्तान के लिए. इसमें आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते. ये बड़ी अहम बात है और ये एक फाउंडेशन है मैं समझता हूँ इस पॉडकास्ट की. और जो आपने जो पावर पॉइंट दिए, इसे रियलाइज करना है अगर हमने, उसमें सबको, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें बात करनी होगी ऑन इकोनॉमी. जब तक वो नहीं होगा उस वक्त तक आपकी अनसर्टेनिटी रहेगी, और जब तक अनसर्टेनिटी रहेगी उस वक्त आपसे कोई मिलने के लिए नहीं तैयार होगा. जितने मर्जी आप रोड शोज कर लें, आप, हमारा बेस्ट फेवरेट पास है, रोड शो करते हैं जाके, दबा के बजट उड़ाते हैं दुबई में, US में और ऐसे. लेकिन आपसे कोई डील नहीं करेगा. नो वन विल बी सीरियसली टॉक टू. और इसमें मैं आपको एक और चीज बताऊं, मैंने बताया था गवर्नमेंट को भी, चाइना और चाइनीज कंपनीज आपसे एक लिमिट तक बात करेंगे कि आप एक आयरन ब्रदर, एक क्लोज, बहुत पुराने हिस्टोरिकल ताल्लुकात है हमारे. वो अब वो याद आता है मुझे, एक हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एक बड़ा मशहूर हो गई थी लाइन, गल बद गई है. याद है आपको? तो अब जो है गल बद गई है इसमें कि ममालिक की सिर्फ दोस्त से करीब दोस्त ममालिक हो, वो इस बात पे आपसे नहीं सिर्फ डील करेंगे कि जी पाकिस्तान बड़ा बरादराना मुल्क है जी, इनमें जरूर हमने इन्वेस्ट करना है. What do you offer that Bangladesh doesn't? You have to be competitive, and we have to improve our competitive index. So these are some side notes, Kale, on the fantastic presentation that you have made, which is actually a centerpiece of this podcast, of basically Pakistan the way forward. And I see a lot of light at the end of this tunnel, and I feel that the best is definitely yet to come. Thank you so much for this. And I'd end up on this note as well that Pakistan is essentially, I think, in the among the different countries and the nations, I think from a growth potential, Pakistan is probably the least exploited as yet. आप कोई भी सेक्टर उठा के देख लें तो the growth has actually yet to come. और अगर आप पाकिस्तान के कोई फंडामेंटल जो एसेट्स हैं, अगर आप उन फंडामेंटल एसेट्स
को रिव्यू करें तो देर इज ऑलमोस्ट नथिंग दैट्स एक्चुअली लैकिंग. सो हमारे पास कोई पानी की कमी नहीं है, हमारे पास कोई ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं है, हमारे पास कोई स्ट्रेटेजिक प्लेस इन द वर्ल्ड की कोई इशू नहीं है. इट इज ऑल essentially to do with us, nothing to do with like what we cannot change, which is our geography or our natural resources. So essentially, I think with a positive frame of mind, आज जैसे इंसान ने अपने मसाइल से निकलना हो तो जो साइकेट्रिस्ट हैं वो यही कहते हैं कि आप अपने सी एक पॉजिटिव एटीट्यूड से चलेंगे तो आप अपने मसाइल को हल कर सकते हैं. जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको वो डोज ऑफ ऑफ प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप डोज ऑफ होप से आप जो है वो बीमारी भी सॉल्व कर लेंगे. So essentially, with an optimistic face in the confronted with a lot of difficulties and hardship, और मैं और आप और हमारे जैसे बहुत से सुनने वाले तो शायद जो आम पाकिस्तानी की दुश्वारियां हैं उनको हम एक्चुअली कभी महसूस या खुली कॉम्प्रहेंड भी नहीं कर सकते. So there is no belittling that. The only thing is that with hope we are able to uh, strive forward more. With this view, I'd like to end, and me and Mustafa would, inshallah, come up with more hopeful notes, but not hopeful just from a patriotic point of view, but hopeful in the sense of based on data and experience. More guests who share this opinion and would share their journey and why they think Pakistan is certainly not a lost cause, and certainly not a failed state, and certainly not a project uh, gone wrong. So हम अगली एपिसोड्स में आपके साथ मजीद इस तरह के कुछ sound bites and data points share करेंगे. With this, I'd like to end. Thank you so much.